चलिए, एक पानी की उसको बोलना, पानी दे दीजिएगा ना। है नहीं नहीं, कॉफी बाद में देखें। आप इधर ही आए बेटे। मैं आपसे कह रहा था ना कि आपको प्रोसीजर का पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो उसके बारे में एक स्टोरी मैं आपको पहले सुनाता हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है। स्टोरी ये है कि ऑर्डर 18 अमेंड करा पार्लियामेंट ने, 12 और 13 ईयर्स बैक। ये कहा कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ है उसकी जगह आप एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ का टाइम है वो सेव हो सकता है। ठीक है। लेकिन क्या हुआ उससे? क्या आपको लगता है कि टाइम बच गया, सेव हुआ टाइम? वो कहीं कोर्ट में बताओ, उससे टाइम बचा? नहीं बचा। एक वो कहानी इसी उसमें है, और ये रियल कहानी है, कोर्ट में एक्चुअली ऐसा हुआ। एक विटनेस आया, विटनेस ने एफिडेविट फाइल कर दिया, और जबकि रूल तो ये है, एक्सपेक्टेशन भी ये है कि सेम डे ही क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। लेकिन जनरली वकील क्या करते हैं कि जी मुझे तो आज एफिडेविट मिला है, आई हैव टू गो थ्रू द कंटेंट्स, इसलिए मुझे एक तारीख चाहिए उसको पढ़ने के लिए, अगली तारीख में क्रॉस एग्जामिनेशन करूँ। एक तारीख तो वो चली गई। एक तारीख का मतलब है कम से कम 2 महीने। ठीक है। अगली तारीख पे क्रॉस एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन पूछा वकील ने कि आपको बंता सिंह ने क्या बताया। दूसरे वकील ने ऑब्जेक्शन करा कि जी ये तो नहीं पूछ सकते, ये तो मेरा तो सारा लीक हो जाएगा डिफेंस। वो कहता जी मेरा तो केस इस पे दारोमदार है सारा, मैं तो पूछना ही है, क्वेश्चन ही है, डिस्प्यूट हो गया। तो कोर्ट से कहा गया कि जी आप इसका फैसला करिए। तो कोर्ट ने कहा बताइए आप अपने अपने पक्ष में दीजिए आर्गूमेंट्स। तो वकीलों ने कहा जी आज तो हम तैयार नहीं है, हमें टाइम चाहिए उसके लिए। अगली तारीख लग गई, 2 मंथ्स मोर। अगली तारीख पे डिफेंडेंट के वकील ने पूरा दिन बहस करी और 50 जजमेंट साइट करी कि ये सवाल मैं पूछ सकता हूँ। प्लेंटिफ के वकील ने कहा कि जी आई हैव to have time to go through all the judgments and only then I can reply. Another adjournment, another 2 months. अगली तारीख पे प्लेंटिफ के वकील ने बहस करी और 50 जजमेंट्स उसने साइट करी। तो जज ने कहा कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है। Another adjournment, 8 months. 1-2 तारीख जज ने ले ली कि भी ऑर्डर तैयार नहीं है। So it was about a year or so that had gone, but no resolution was in sight. Ultimately, after 1 year, जज ने 100 पेजेस का ऑर्डर लिखा और उसमें होल्ड किया कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो कहा जी पूछिए। उसने कहा जी आज तो मैं रेडी नहीं था इसके लिए। ठीक है, आज तो आपके ऑर्डर्स के लिए था, आपने ऑर्डर सुना है, अगली तारीख पे मैं करूँगा क्रॉस एग्जामिनेशन, आज मैं कर सकता हूँ। Another 2-3 months, अगली तारीख आई तो he came to the court beaming कि मेरी तो बात देखो, मेरी विक्ट्री हो गई है और कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया है, और अब तो मैं विटनेस की ऐसी तैसी कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन मैं पूछूंगा और क्या क्या उससे आंसर्स एक्सपेक्ट करूंगा। तो उसने पूछा कि अच्छा बताइए भाई, आपको बंता सिंह ने क्या कहा, क्या बताया? तो कहता जी बंता सिंह तो मुझे मिला ही नहीं, बंता सिंह नहीं मिला मुझे, बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है।
So what is the moral of the story? Moral of the story is that the judge sitting on the high chair must be aware of the facts of the case and procedure involved in the matter. Right? अगर जज को ये पता होता है कि बंता सिंह इसको मिला ही नहीं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन ही डिसअलाउ वहां होना चाहिए था, उसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं थी। वो क्यों 1.5 साल लग गया? क्योंकि जज को केस के बारे में नहीं पता था, ठीक है। और इक्वली जो प्लेंटिफ का वकील था उसको भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था। अदरवाइज जब उसने एफिडेविट तैयार कराया था तो एफिडेविट में लिखी सारी बातें, बंता सिंह मिला कि नहीं मिला, है ना। उसने भी प्लेट की कॉपी उसको दी, टाइपिस्ट को, उसने एफिडेविट तैयार कर दिया और उसने ओथ कमीशन से टेस्ट करा के कोर्ट में फाइल कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको कोर्ट में जरूर जाना चाहिए और वहां की प्रोसीजर देखनी चाहिए, कैसे प्रोसीजर कोर्ट में कैसे फॉलो करते हैं। चलिए अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है सिविल लॉज एंड प्रोसीजर एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड। तो अगेन एक कहानी आपको सुनाऊंगा। ये आप एक फोटो देख रहे हैं, इसमें एक हवाई जहाज जा रहा है, आगे उसका हवाई जहाज क्रैश हो गया हो, राइट। ये कुछ लोग बैठे हैं यहाँ। तो इमेजिन करिए एक सीन कि आप एक क्रिकेट टीम लेके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो हवाई जहाज में। 50 लोग टोटल हैं उसमें फ्लाइट में, और वो फ्लाइट क्रैश कर गई एक डिजर्टेड आइलैंड पे, राइट। उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो डिमोलिश हो गया। There is no way to connect with the outer world. आप क्योंकि क्रिकेट टीम के लीडर थे या मैनेजर थे या कोच थे और क्रिकेट टीम में सारे ये महसूस करते हैं कि पढ़े लिखे लोग थे, तो जो ये 50 लोग थे इन्होंने कहा कि जो ये 10 लोग हैं ना, ये क्रिकेट टीम वाले, ये कुछ पढ़े लिखे हैं, इनसे हम कहेंगे कि आप कुछ इसको मैनेज करिए अफेयर को, ठीक है। अब इमेजिन करिए एक आइलैंड है, चारों तरफ समुद्र है और आप 50 लोग हैं, और उस 50 लोगों में से 10 लोगों को एक जिम्मा दे दिया कि आपने ये अफेयर्स मैनेज करने हैं इसके ग्रुप के। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या आपके दिमाग में आएगी? सर्वाइवल, यस। तो पहला क्या किया कि पहला तो कुछ ऐसे इंतजाम करें कि कहीं कुछ खाने पीने के लिए हम कोई जमीन ढूंढ के उसको फ्लो करें, इरिगेट करें, उसमें कुछ पैदा करें, सो दैट वी आर एबल टू हैव फूड एंड देयर बाय सर्वाइव, ठीक है। दूसरा था सिक्योरिटी, कि वाइल्ड एनिमल्स वहां होंगे, कोई अटैक कर सकता है। तो दूसरा उन्होंने क्या किया कि फायर का इंतजाम करें, और फायर शुड कीप ऑन बर्निंग थ्रू आउट द नाइट सो दैट द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट अवे। अब ये सारी बातें हो गई, फिर उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद एक एरिस्टोटल का छोटा सा स्टेटमेंट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप बताना कि क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। एरिस्टोटल ने एक बार कहा, एट हिज बेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस ही इज द वर्स्ट। जब ये नेचर है आदमी की, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कि हम कोई रूल बनाएं जिससे सबको ऑर्डर में रखा जा सके और यहाँ जो काम है वो ठीक ठाक चलता रहे, ठीक है। अब लॉ के लिए क्या जरूरी है? लॉ के लिए जरूरी है कि एक तो लॉ सबकी वेलफेयर के लिए हो, एक ये एक्सेप्टेबल हो सबको। तो किसकी जिम्मेवारी है? वो जो 10 लोगों का ग्रुप है उनकी जिम्मेवारी है कि ऐसे रूल्स बनाएं जो सबको एक्सेप्टेबल हों,
या वो सबको कन्विंस करा सकें कि ये लॉज यहाँ रहने के लिए जरूरी हैं और ये सब आपकी वेलफेयर के लिए है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ लॉ कम्स इनटू बीइंग। हमें लॉ की जरूरत पड़ती है। चलिए एक और सिचुएशन है, आपने कोई सामान खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, लेकिन उस जगह पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, कोई थेफ्ट या एक्सटॉर्शन के खिलाफ आपको प्रोटेक्ट कर सके, तो क्या वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहोगे? क्यों? ताकत है, आप प्रोटेक्ट करिए अपनी प्रॉपर्टी को। नहीं, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू लिव इन पीस। ठीक है, जब आप प्रोटेक्ट करोगे तो नेचुरली आपको फोर्स यूज करनी पड़ेगी। जब आप फोर्स यूज करोगे दैट इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन टू इंजरी टू द अदर साइड एंड रिजल्ट इन टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो इसकी भी लॉ की हमें जरूरत पड़ती है कि लॉ हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिस्प्यूट्स को पीसफुल और एमिकेबल तरीके से सेटल कर सकते हैं। ठीक है, सो वी आर क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लॉ। व्हाई शुड वी हैव लॉ? बताइए, आप बताओ। टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर and to provide for a mechanism for resolution of disputes between the parties। ठीक है, चलिए अब ये तो थी कहानी। अब दो तीन डेफिनेशंस हैं लॉ की। आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ देम, बट स्टिल लेट्स हैव ए लुक ऑन द डेफिनेशंस ऑफ लॉ। Law is one of several techniques people use to prevent or resolve conflicts, as we just now saw. Because law plays diverse roles in lives of different people, everyone therefore has their own interpretation of law and what law is and what law ought to be. According to Salmon, the law may be defined as body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice. According to John Austin, law is the aggregate set of rules set by a man as politically superior or sovereign to men as political subjects. So law thus is a set of rules of conduct developed by the government or society over a certain territory in order to deal with crime, business, social relationships, property, finance, and the like. So you are aware of how many kinds of law? Yes, civil and criminal। सिविल एंड क्रिमिनल तो हाँ, ये सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है प्रोसीजर ऑफ सिविल लॉज। सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल। व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ? It talks about rights and liabilities also, right? And procedural laws, punishment and yes, procedure for resolution of disputes. And what is the civil law? Civil rights and liabilities, contractual rights, torts, all these are civil laws. And criminal law, that deals with offenses and punishment for the offenses, right? And what is adjective law?
law is another name of procedural law, right? So procedural law provides for the procedure, and substantive law provides for the rights and liabilities of the parties, right? We can say that adjective or procedural laws are the set of procedures to be followed for administering and enforcing substantive laws. Substantive laws is a body of rules that creates, defines, and regulates rights and liabilities, while procedural laws establish a mechanism for determining those rights and liabilities and a machinery for enforcing them. How many types of civil laws you are aware of? Yes. How many types? ये लिखा है यहाँ, ये नकल मार के बताओ. Contract law. What is contract law? That deals with agreements between two or more parties, and each of whom is obliged to honor their part of the agreement. That is contract law. Property law. Yes. Very clear, deals with property. How many kinds of properties are there? Movable, immovable, tangible, intangible, personal property, real property. What is intangible property? Any examples? Examples. Let us see first what is tangible property. All this, the benches, this table, this mobile phone, this laptop, all these, jewelry. And intangible is reverse of it, which cannot be seen or touched like this. For example, stock market shares, patents, copyrights, trademarks, all these are intangible properties. And real property, आपने देखा ना, रियल एस्टेट मैनेजर्स मार्केट में बोर्ड लगे होते हैं, landed property. Yes, that is called real property. Land and anything built on it that cannot be easily removed, as well as anything under the surface of the land, such as oil and minerals. These are all real property. Another branch of civil law is family law. It deals with for example, matters. Yes, divorce, marriage, annulment of marriage, maintenance, alimony, child custody, adoption, birth, child support, domestic violence, and other issues affecting the families. And another very less used branch of law is tort law. What is tort law? Civil wrongs. Used very rarely in India. Laws is all right. What is the use of laws if there are no remedies to enforce the laws? Can you think of some remedies available? क्या सिस्टम है इसका? ये तो आगे जा रहा है. आप बहुत जरा पता है आपको? इस पे
तो वही 15 पे आ गया ना फिर। Yes. Yes, remedies under civil law. Are you aware of a Latin proverb, ubi jus ibi remedium? There is a remedy. And if there is no remedy, then there is no use of law. Right? So, what are the remedies available in civil law? Yes. Monetary relief, that will include damages, compensation, specific performance. Can you pinpoint the provision for monetary reliefs in the Indian Contract Act? Section 73 of Indian Contract Act and sections 21 and 40 of Specific Relief Act. Then specific performance, the entire Specific Relief Act deals with specific performance of the contracts. Injunctions. Tell me these sections for injunctions. Sections 36 to 42 of Specific Relief Act, Chapter 7 and 8 of that Act. And any provision in the CPC, Order 39, Rules 1 and 2, that is regarding temporary injunctions. And what is the difference between prohibitory injunction and mandatory injunction? And mandatory? Yes. Declaration? (34) and 35 of Specific Relief Act. And what does declaration mean? You have a right, but you want a declaration from the court that that particular right belongs to you. That is declaration. Right is already there, but you need an authentication of that right by the court. That is declaration. Sections 34 and 35 of Specific Relief Act. Then there are certain judgments. We say that the procedure should be handmaid of justice and it should be just and fair and reasonable. In a judgment, Supreme Court says that justice is the goal of jurisprudence, processual as much as substantive. Similarly, fundamental aim of law is to deliver justice. Processual law is not to be a tyrant, but a servant, not an obstruction, but an aid to justice. A procedural prescription is the handmaid and not the mistress, a lubricant, not a resistant in the administration of justice. And if you want the judgment, the judgment is Sambhaji and others versus Gangabai, 2008, volume 17, Supreme Court cases 117. Yes, what does procedure law provide for? Institution of civil suits, service of process, pleadings, that is statement of claim and statement in defense, discoveries and interrogatories, time, manner and admissibility of evidence, hearing the parties, the judgment, the appeal and the execution. So, we'll see some provisions of the CPC
about the civil procedure. And I hope that you are aware of the provisions. Should I be hopeful or no? Yes, presentation of plaint. Order 7 is all right. But before that order, there are two more orders, order 2, order 4, order 6 and order 7. All these orders pertain to the plaint, how a plaint is framed, how it is presented to the court. Then service of summons. Yes. Order 3 and order 5. Appearance of parties. Ex parte decree. Ex parte decree order 8, rule 5(2), order 10 and order 11, rule 6(1)(a). Interlocutory proceedings. Yes. What are interlocutory proceedings? There are many. First of all is order 38, arrest and attachment before judgment. Order 39, temporary injunctions and interlocutory orders. Order 40, appointment of receivers. And order 26, appointment of commissions. Written statement. Production of documents. 13. Order 13. Examination of parties. Order 10. What is the use of examination of parties? Why should we examine the parties before settlement of issues? To narrow down the scope of the litigation. There may be many things which the parties may not be at litigating mood. And when you examine the parties, most of the things are resolved there itself, and that narrows down the scope of the litigation. Discovery and inspection. Order 11, yes. Admissions. Order 12. Framing of issues. Yeah? Yes, 40. Order 14. How issues are framed? Yes. Issue means what in layman's language? Dispute. And in legal language? Issue is when a particular fact is stated by a party and is denied by the other party. Then there arises a dispute, and that has to be resolved by the court. Then summoning and attendance of witnesses. Order 16. Have you gone through this order? No. Order 16 says that the parties are required to file list of witnesses within 15 days from the date of settlement of issues. And what if it is not done? No. Then the party in default is precluded from summoning the witnesses except with the leave of the court. अगर आपने लिस्ट फाइल नहीं करी है तो आपको कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी विटनेस को बुलाने के लिए, अदरवाइज आप बुला नहीं सकते. Then hearing of suits and examination of witnesses. Order 18. Arguments. We argue the cases before the courts. Can you pinpoint the particular provision where under arguments are heard by the court? No. Just now we refer to order 18, and in order 18 there are rule 3A, 3B, 3C and 3D which deal with arguments. Then judgment 20.
preparation of decree. Again 20, rule 16 to 19. And rule 16 to 19 say that a decree can be prepared after the judgment has been pronounced on a subsequent date. What date should it carry? Yes, date of the judgment. Then appeal, reference, review, revision. What are the provisions for filing appeal? Section 96 and 100. Then order 41. Order 46 and section 114 pertains to reference. Order 47, 114 and 47 review, and 115 revision. Then execution of decree. In the substantive portion, execution is the most expensive area of CPC and most difficult area. It is said that real trouble of the plaintiff starts after the suit has been decreed. How many sections are in CPC? 154 or something. And order 21 alone has 122 or some odd 106 rules. Order 21. So you can imagine how difficult it is to execute a decree. And substantive portion is sections 36 to 74. So this is about the procedure. Now comes the very important area that law should be able to change according to the no problem. Law should be able to change or evolve according to the needs of the society. Right? Why? Why? Yes. Society changes over time and so does the thought process. Laws cannot be isolated from individuals and the community that they seek to regulate. A thorough understanding of society, its value systems, culture, reasonable needs, claims, besides fitness to adopt progressive and liberal ideas are factors which merit consideration in modification of existing laws and enactment of new ones. Laws evolve in societies over time and therefore reflect its views. A judge of the Supreme Court, Justice Sanjay Kishan Kaul, he was addressing International Judicial Conference in the year 2020, and he emphasized that just as the world is changing, the judiciary has to use its synergy and imagination in keeping pace with the changing expectations. The judicial system has to be bolstered to make the judiciary resilient and dynamic in the true sense of the word, to fulfill the role of a powerful stabilizing and moderating influence. So what are the considerations for social change? Yes, these are natural evolution, economic reasons, technological developments, and resolution of conflicts, right? For instance, same-sex marriages have been legalized in 22 countries, and there is a lot of hue and cry in our country also to legalize the same. But the Supreme Court has turned down the request very recently. Then, a similar demand to legalize same-sex marriages in other jurisdictions puts pressure on the traditional institution of marriage itself. Change in idea of justice.
Demand for change in laws also arises due to a change in ideas of what constitutes justice in society. For example, slavery, which was legal a couple of centuries ago, is illegal today. Right? About 200 years back, slavery was legalized. You could keep slaves, but now you cannot. It is prohibited in law. Globalization. Yes. Globalization also necessitates change of law or evolution of law. Then advancement of science and technology. Can you pinpoint any particular area which has developed very recently? Area of law. Area of law. You belong to Haryana? From Gurgaon and surrounding areas, a gang has been arrested very recently. Recollect? Cybercrime. Cybercrime. Very recently, a scam has been posted in Gurgaon, and I think a few hundred of people have been rounded off. And information technology, right? So these are the areas which have come into focus because of advancement of science and technology. Then next is collective welfare versus individualistic interest. Now we are more individual centric than society centric, and that has also necessitated modification or evolution of laws to cater to those needs of the individuals. Then next is betterment of marginalized sections of society. For example, can you tell some such sections of society marginalized which we call? No. We every day hear of reservations. What does it cater to? The marginalized sections of the society. Dalits, sometimes we call them. Sometimes we come across the terms like Divyang or differently abled people. Now we'll see some judgments which have brought in various changes in law. First of all is free and compulsory education for all children. Can you pinpoint the amendment of Constitution which has brought in this? Yeah? 86th. Which article has been amended? 21. 21A. What does it say? Free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years. What act has been passed in consequence of this judgment? Yes, Right to Education Act 2009. Then next judgment is Khatri versus State of Bihar. It is about right to free legal aid. What act has been passed in consequence of this judgment? Legal Services Authority Act. What does it say? Free legal aid for the weaker sections of the society. And what else? It also provides for lok adalats, mediation, conciliation, all alternative resolution disputes mechanisms. Then another judgment is Hussain and another versus Union of India. This is right to speedy trial as part of reasonable, just and fair procedure guaranteed by Article 21 of the Constitution.
Then National Legal Services Authority versus Union of India. In this case, Supreme Court has directed center and state governments to grant legal recognition of gender identity of transgender persons such as male, female, or as a third gender, and to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and public appointments. What act has been passed in Constitution? You are currently the only person in this conference.
को गया ऑनलाइन। आई एम ऑडिबल टू यू? एक लड़की है। ये हमारी और स्लाइड तो पीछे चलेगी ना। तीन। So तलाक़े बिद्दत was declared illegal by the Supreme Court in Shaira Bano versus Union of India. Right? What act has been passed in consequence of this judgment? Yes. Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 to protect the rights of married Muslim women and to criminalize triple talaq. Another judgment, Justice K.S. Putta Swamy versus Union of India. In this, Supreme Court has held that right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by Part 3 of the Constitution. Another judgment, Buddha Dev Karmaskar versus State of West Bengal. In this case, Supreme Court has recognized the right of sex workers to life and dignity under Article 21 of the Constitution. Navtej Singh Johar versus Union of India. This is pertaining to decriminalization of same-sex relations. A very important judgment about right to sleep as a fundamental right. Are you aware of it? Yes. You are aware of this incident? No. Members of civil society were demonstrating at Ramlila Maidan. They were thousands in numbers, and the spot was raided by the police during the night. And Baba Ramdev had to put on clothes of a woman to escape from there. That is the highlight of the case. And Supreme Court took suo motu notice of the incident and passed this judgment. Then Common Cause versus Union of India and another. In this case, the court reaffirmed that right to die with dignity is a fundamental right as declared by a constitutional bench of the Supreme Court in the case of, what was the earlier case? Gyan Kaur versus State of Punjab. And even prior to that, Haruna Ramchandra Shanbag versus Union of India. Then, Right to Information Act 2005. Are you aware of a judgment on Section 66 of this Act? Right to Information Act. Section 66 has been declared ultra vires by the Supreme Court. Then Digital Personal Data Protection Act 2023. It provides for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto. Then another act, Right of Persons with Disabilities Act 2016. By this act, responsibility has been cast upon the appropriate governments to take effective measures
to ensure that the persons with disabilities enjoy their rights equally with others. Disability has been defined based on an evolving and dynamic concept. About this act, have you had a round of the city of Chandigarh? चंडीगढ़ में घूमा कहीं आपने, गया चक्कर कहीं? लोकल बस स्टैंड देखा आपने? क्या देखा उस पे? Yes, that is in consequence of this judgment of the Supreme, this act, sorry. Then Disabled Right Group versus Union of India. The Supreme Court directed all educational institutions run or aided by the government to comply with their obligation to reserve 5% seats for the disabled. Another judgment, Rajiv Raturi versus Union of India. In this case, the Supreme Court has issued a number of directions aimed at making the country's physical infrastructure accessible to the blind. Notably, the directions issued by the court are very capacious in scope, inasmuch as they cover everything from accessibility of railway stations to the accessibility of government websites, etc. Then there are hazardous waste management, handling and trans-boundary movement rules 2016. These are to ensure safe handling, generation, processing, treatment, package, storage, transportation, use, reprocessing, collection, conversion and offering for sale, destruction and disposal of hazardous waste. National Green Tribunals Act 2010. What is the function of this NGT? Yes. Have you heard of National Green Tribunal? What does it do? Yes, it deals with environmental issues. Then alternate dispute resolution mechanism. Which is the provision in CPC for this? ADR, section 89. What are the mechanisms available under this ADR? Just now we talked about them. Lok Adalat, arbitration, conciliation and mediation. Negotiation. And very recently Mediation Act has been passed, and in certain cases mediation has been made mandatory. Mediation Act 2023. Then National Education Policy. It lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. It is based on principle that education must develop not only cognitive capacities, both the foundational capacities of literacy and numeracy and higher order cognitive capacities such as critical thinking and problem solving, but also social, ethical and emotional capacities and dispositions. Then we come to a very important aspect. It is use of technology. Can you point out the areas where technology is being used by the courts? Yes. The court website or video conferencing. We can record evidence by video conferencing. E-courts project. This improves access to justice, streamlines the management and enhances court processes. It aims to transition from paper-based procedures to digital ecosystems, making the judiciary more accessible and transparent. Key components of the e-courts project include the National Judicial Data Grid, a centralized online platform that provides real-time data on pending and disposed of cases and enhances transparency by offering information on case status, orders and judgments to litigants and lawyers. You can now know about the status of your case while sitting at home. And if you go to the High Court, you will find that at various places kiosks have been established
and from there also you can find out the status of even the running cases which are being heard by the courts. And the same function is of case information system. From this system you can find out case numbers, names of parties, advocates names, case status and history of the cases. Then wide area network. It about wide area network includes the implementation of wide area network connecting courts nationwide and enabling seamless communication and data sharing, promotes collaboration and coordination between stakeholders. It saves time and enhances convenience. By this system, a Supreme Court judge can monitor the proceedings of any court in the country, and we are working towards establishing a system where it may be possible to decide the trial, the first appeal, the second appeal, and the final appeal in one go. How? As we are doing it here, when the trial court is hearing the arguments, those arguments will be heard by the High Court and by the bench of the Supreme Court simultaneously. And all the three courts can give their opinion at that very particular point. So that way, we will be able to eliminate the time consumed in filing appeals and special appeals and whatnot. As of now, it takes about, in ideal circumstances, about 10 years to reach the final stage of the litigation. Ideal stage situation, I am saying. Otherwise, in the High Court, we are deciding appeals which were filed in the years 1990 or 91. So, if this system ultimately comes to working, all these years can be eliminated. E-filing. You can file a case in the Supreme Court while sitting in Chandigarh, right? You are currently the only person in this conference.
can prepare your pleadings, right? It can translate your documents, and we are heading towards a system where AI would be deciding these typical cases like 138 cases, right? Like pronote cases, stereotype cases. You just feed the facts, and the AI will give you the judgment. So these are some of the developments which has taken place in the field of law as far as civil law is concerned. We have seen the judgments also and various acts passed by the legislature in the field. If you have any questions, try to answer them according as per my capacity. Any questions? Even otherwise, other than the topic before us, working of the courts, how to prepare for judiciary, how to motivate yourselves to. Yes, no questions. Not a good trait for law students. प्रीलिम्स करो क्लियर. अच्छा, मेंस के बारे में ऐसा है, आप मैरिज पार्टी में गए होंगे किसी में, है ना? आप जरा लेआउट बताइए वहां की. मैरिज पार्टी में आप गए खाने के इसमें, आप बताइए कैसे कैसे लेआउट कैसे कर रखी होती है. उसमें ही सारा आपका सिस्टम छुपा हुआ है. जब आप एंटर करते हो खाने के एरिया में, सबसे पहले क्या है? सैलेड है ना? नहीं, वो तो फिर अगर आपने कसम ही खा रखी मैंने फेल ही होना, फिर तो कोई नहीं आपको बचा सकता. नहीं होती दो साइड से कैसे एंट्री होगी? जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलोगे आप सिस्टम के हिसाब से चलोगे ना. अगर आप सिस्टम को ही ब्रेक करना चाह रहे हो, फिर तो आपका कोई इलाज ही नहीं है. तो पहले आपकी एंट्री होगी सैलेड, ठीक है? सैलेड में क्या होगा? साबुत प्याज होंगे, साबुत है, और साबुत मूलियां होंगी, साबुत गाजरें होंगी, ऐसे ही है ना? या कुछ और होगा? कटे होंगे, बड़े सलीके से कटे होंगे, बड़े सजा के कटे होंगे. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के जो पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, है ना, दैट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर. आपको सैलेड का जो वो एरिया लगा है ना, वो आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना? फिर आगे उसके सब्जियां हैं, रोटियां हैं, तो सैलेड सैलेड खा के आप काम चला सकते हो कि आगे उसमें भी जरूरत है आपको कुछ और, है ना? दैट टेल्स यू दैट कंटेंट हैज आल्सो बी गुड, राइट? यानी आपने अगर 10 क्वेश्चंस करने हैं, उसमें से सबसे पहले तो आप वो क्वेश्चन चूज करिए जो आपको सबसे अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है, ठीक है? सबसे पहले वो अटेम्प्ट करिए आप, और एक बचा के रखिए एंड में अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है? दूसरी बात यह है कि एग्जामिनर ये भी देखना चाहता है कि आपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किया है या मत किया है ना? और वो आपके क्वेश्चन के आंसर से पता लगता है, आपने रट्टा लगाया है या वाकई आपने अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन लिखा है, ठीक है? तीसरी बात है कि आप लैंग्वेज वो यूज करिए जो आप समझते हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकते हैं एग्जामिनर. अगर आपको लीगल टर्म्स याद हैं, लैटिन टर्म्स आपके बड़ी अच्छी तरह से मास्टरी है, यू मस्ट यूज देम. अदरवाइज डोंट गेट एंटेंगल्ड इन लीगल वोकैबुलरी. पर्पस इज टू कन्वे योर थॉट प्रोसेस, ठीक है? एक जजमेंट्स पढ़नी बहुत जरूरी है. कितने लोग पढ़ते हैं जजमेंट्स? नहीं पढ़ता, है ना? जजमेंट्स जितनी आप ज्यादा पढ़ोगे उतनी आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. उसको आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. आपने यहां से दिल्ली जाना है,
आप एक टैक्सी स्टैंड पे जाते हो और उसको बोलते हो कि मैंने दिल्ली जाना है, ठीक है, वो कहता है जी 5,000 रुपये लगेंगे। आप बैठे टैक्सी में, टैक्सी के शीशे काले हैं, शीशे अप करता है, आपको बिठाता है और 3 घंटे बाद आपको बोलता है कि जी दिल्ली आ गई, आप उतरिए, ठीक है। इस सिस्टम में आपको रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता लगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप शीशे खुले रखते हैं, फिर आपको पता लगता है कि दिल्ली जाने के लिए पहले डेराबस्सी आएगा, फिर अम्बाला आएगा, फिर कुरुक्षेत्र आएगा, फिर करनाल आएगा, फिर पानीपत आएगा, सोनीपत आएगा, सारी पता लगेगी ना बातें आपको। और साथ में आपको थोड़ा बहुत अम्बाले की झलक मिलेगी, थोड़ा बहुत सोनीपत की झलक मिलेगी, थोड़ा बहुत पानीपत की झलक मिलेगी। दिल्ली आप जब पहुंचोगे दिल्ली की तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही जजमेंट जो है, जब ट्रायल कोर्ट से केस चलता है तो एक लाइन का डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है? दैट ए वांट्स टू एनक्रोच अपॉन माय प्रॉपर्टी, दिस इज द डिस्प्यूट, राइट। इसका कितना फैसला होना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि नहीं करेगा, दिस इज द ओनली थिंग। बट व्हेन द मैटर रीचेस द सुप्रीम कोर्ट, the judgment that comes from the Supreme Court runs into 100 pages. What does it mean? It means that the process takes you through the entire evolution of law of injunctions, entire gamut of law of injunction, and you understand it in seconds. लेकिन अगर आपने देखा कि जी इंजंक्शन का दावा था और एंड में जाके देखा क्या रिलीफ मिला है, फिर आपको बीच में उसकी जो जर्नी है वो नहीं पता लगी आपको, ठीक है ना। तो इसलिए जजमेंट्स बहुत जरूरी है, आप जजमेंट्स जरूर पढ़ा करो। मैंने कहा जरूर करो, लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से याद है, हाँ करवाते हैं। आगे आपने एग्जामिनर को ये शो करना है कि मैं अंडरस्टैंड करके लिख रहा हूं, है ना। डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखिए आप, लेकिन उसको एक्सप्लेन करिए अपने अपने वर्ड्स में, वो जरूरी है। क्या कहा मैम ने? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आप जरूर लिखिए, लेकिन पहले उस पर मास्टरी करिए। अगर आपको याद है जरूर लिखिए, अगर याद नहीं है उनमें आप उलझ जाओगे तो आपको जो पता है वो भी नहीं आपको याद रहेगा।